हेलो एवरीबॉडी, गुड टू सी यू। नमस्ते। मैं जितना हेलो सर। हिंदी। हेलो हेलो रश्मिता, नाइस टू सी यू अगेन। मैं जितना हो सकता है मैं हिंदी में बोलूँगा और बीच बीच में अंग्रेजी में स्विच करूँगा। इंग्लिश इंग्लिश विल बी द लैंग्वेज दिस इवनिंग, मिली जुली। और लेट्स सी। सो ब्लॉक करेक्शन जो है, ये स्टैमरिंग लिटरेचर में, स्टैमरिंग क्लिनिकल लिटरेचर में, ट्रीटमेंट लिटरेचर में इसको काफ़ी एम्फेसिस दी गई है। और जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ब्लॉक करेक्शन कि अब ब्लॉक हो चुका है, उसके बाद क्या करें। आप सोचेंगे कि ब्लॉक ना हो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी तरीके हैं। लेकिन और इस सबको जो है मैं एक डायग्राम से इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ। ये सबको सबको दिख रहा है, ये मेरा हैंडी हैंडी हैंड आउट। ओके। यहाँ यस। पे ब्लॉक करेक्शन लिखा हुआ है ऊपर और दो टेक्निक लिखी हुई हैं। एक तो है कैंसलेशन, एक है पुल आउट। और बीच में इस ग्राफिक का मतलब ये है कि हम बोल रहे हैं, ये हमारी फ्लुएंट स्पीच है, ऊपर नीचे जाती है इन्फ्लेक्शन में, ऊपर नीचे जाती है टोन में। और यहाँ पे हम ब्लॉक में चले गए, ब्लॉक में चले गए, हमने ब्लॉक किया जो भी है। वी आर एक्सपीरियंसिंग अ ब्लॉक, ब्लॉक का हमें अनुभव हो रहा है। और उसके बाद जब ब्लॉक खत्म हुआ तो उसके बाद हम आगे फिर से पढ़ने लगे। तो ब्लॉक करेक्शन का मतलब यह है कि हम ब्लॉक जो है करेक्ट कर सकते हैं तीन जगह पे। अगर हम जानते हैं कि ब्लॉक आने वाला है तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने बिहेवियर में, अपनी स्पीच में। तो उसको प्री ब्लॉक करेक्शन बुलाते हैं। जब हम ब्लॉक में जब और अगर कई बार मोस्टली होता है कि हम जानते हैं कि ब्लॉक में जाने वाले हैं या ब्लॉक करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद लेकिन उनको हमें अवसर नहीं मिलता, माइंडफुल नहीं होते हम। तो ठीक है, हम ब्लॉक में चले गए। तो इस ब्लॉक के ड्यूरिंग ब्लॉक जो है, ब्लॉक के मिडल में, अंदर में कैसे कैसे आए बाहर, ये हमारी दूसरी ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन ये है कि हमने हमने एडजस्ट नहीं किया अपना मूवमेंट बिफोर, एडजस्ट नहीं किया ड्यूरिंग। लेकिन अब जब ब्लॉक खत्म हो गया, जब आगे हम बढ़ने लगे हैं फिर से, तो तब उसका करेक्शन कैसे करें। तो द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्री ब्लॉक करेक्शन, दिस इज कॉल्ड इन ब्लॉक करेक्शन और मिड ब्लॉक करेक्शन, और इसको बुलाते हैं पोस्ट ब्लॉक करेक्शन। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? मेकिंग सेंस? यस। ओके, ठीक है। तो हम आज बात करने जा रहे अब हम आज बात करने जा रहे हैं पोस्ट ब्लॉक करेक्शन के बारे में। उसको कैंसलेशन बुलाते हैं। उसका नाम कैंसलेशन क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जब हम करेक्शन करते हैं ब्लॉक के जाने जाने के बाद, आगे बढ़ने के बाद, जब जब हम वापस जाते हैं ब्लॉक को डिफरेंटली करते हैं, उसको कैंसलेशन बुलाते हैं। और जब हम ब्लॉक के बीच में होते हैं और वहां पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं, उसको पुल आउट बुलाते हैं। और प्री ब्लॉक को के भी काफी नाम है, बट लेट्स नॉट गो देयर टुनाइट। We are going to stick mainly to post block and I will talk a little bit about mid block. अच्छा, one thing we have to be very clear about, मैं फ्लुएंसी की बात नहीं कर रहा। We're not talking about how to talk fluently. We are talking about adjusting the stammering experience so it is less struggled. कि जो हमारे जो स्ट्रगल है ब्लॉक में, जो स्ट्रगल है, जो हम सेकेंडरी बिहेवियर दिखाते हैं, जो टाइम लगाते हैं निकलने में, आंखें जब आते हैं, वो जो संघर्ष है उसको कम कैसे किया जा सकता है, ये फाउंडेशनल बात है, बुनियादी बात है जो हमें ठीक से समझनी है। So we are talking about adjusting the experience, adjusting the stammer, making changes in the stammer. We're not talking about not stammering, if that's very, very clear. ठीक है? If that is clear, then let's talk about cancellation क्या है। मैं आपको cancellation demonstrate
डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा, दैट्स अ कैंसलेशन। अभी मैंने जो आपको करके दिखाया, मैं वॉलंटरीली टाइटली स्टैमर किया मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पे, ड इन डेमोन्स्ट्रेशन। और जब मैंने टाइटली स्टैमर किया तो मैंने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद मैं रुका, मैंने रिविजिट किया स्टैमरिंग मोमेंट को कि मैंने कहाँ पे मैं अटका, कैसे मैंने पुश किया, और मैंने वो सेम वर्ड जो है माइंडफुली ध्यान देके कुछ उसमें मैं अंतर लाया, कुछ मैंने चेंज लाया कि मेरे जो रीडू है, जो रेपिटेशन है, उसमें संघर्ष कम हो। ये क्योंकि हम जाते हैं कि स्टैमरिंग न्यूरोलॉजिकल है, सो इट इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक एक्सपेक्टेशन कि जब मैं नई बार बोलूंगा रीडू होगा तो मैं ब्लॉक में एकदम बिल्कुल नहीं हकलाऊंगा। लेकिन हमें हमें काफी हद तक फैसिलिटी है, और जो फैसिलिटी है उसको और डेवलप कर सकते हैं कि हम वापस जाके हाउ डू वी एक्सपीरियंस लेस स्ट्रगल, हाउ डू वी एट द बॉडीली लेवल, शारीरिक रूप में हाउ डू वी एक्सपीरियंस लेस स्ट्रगल। सो मैं एक दो और आपको कैंसलेशन 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 करके दिखाऊंगा। दिस इज अ कैंसलेशन ऑन अ कैंसलेशन। ओके, व्हाई इज इट कॉल्ड अ कैंसलेशन? The theory of this, I think, is important to understand, because once we understand the principle behind the practice, we can get behind it a little bit easier. That's my understanding. तो क्या हो रहा है कि जब हम की शारीरिक प्रतिक्रिया हमारे हम सबके साथ ये है कि हम जब मूवमेंट में जब रुकावट होती है, उस रुकावट को दूर करने के लिए हम जोर लगाते हैं। और क्या हो रहा है कि ये रुकावट जो है हर बार नहीं हो रही, कभी कभी हो रही है। और जब हम जोर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारा शरीर जानेगा कि द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड की जब रुकावट हो रही है कि मैं जोर लगाऊं। और ऑब्वियसली देयर इज एन एंटिसिपेटोरी कंपोनेंट टू अ स्टटर। हम जानते हैं कि हम हकलाने वाले हैं, तो हम प्रोएक्टिवली जोर लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमारी बॉडी जानती है, हमारा शरीर जानता है कि इस मूवमेंट को जारी रखने के लिए हमको जोर लगाना है। और हमारा जो स्पीच एपरेटस है, स्पीच मैकेनिज्म है, ये बहुत फाइन है, बहुत डेलिकेट है, बहुत फाइनली ट्यून्ड है, बहुत सिंक्रोनाइज्ड है, लेकिन एफर्टफुल नहीं है ये। इट हैज लो एनर्जी। जब हम हाई एनर्जी देते हैं, उसको एफर्ट लगाते हैं, देन वी थ्रो एवरीथिंग ऑफ द सिस्टम। सो द आइडिया इज टू कैंसल द reinforcement we get from putting in effort by redoing the stammering moment with less effort. ये बिहेवियर प्रिंसिपल है, साइकोलॉजी में प्रिंसिपल है। इट्स कॉल्ड, यू नो एवरी टाइम यू डू समथिंग एंड यू मूव फॉरवर्ड, एनी टाइम you do something and you stop, that is a self-perpetuating behavior. There is a self-reinforcing component in the behavior. Ki the body learns that the only way to move forward is with effort, with effort, with effort, with struggle. So we are canceling the reinforcement. We are canceling the reinforcement that we get from putting effort, and we are redoing the same moment with less effort. So we are in the process canceling out the effort. That's why it's called cancellation. Is that clear, guys? Does that make sense? Okay. Yes, Amit. Yes. So uh let's practice, जैसे कि मैंने दो demonstration demonstration। जब मैं पहली बार अटका तो आपने क्या नोटिस किया? बहुत सारा स्ट्रगल था, बहुत सारा फोर्स था, सेकेंडरी बिहेवियर्स भी आए थे। हाँ,
तो क्या सेकेंडरी बिहेवियर देखे आपने? सेकेंडरी बिहेवियर में थोड़ा सा हेड जर्किंग, हम्म। eyes closed, your आइज mouth क्लोज, ठीक है, मैंने moving, मैंने अपनी पलकें झपकाई, और जब lips उसका भी shake. उसका भी असर नहीं हो तो मैंने आंखें बंद कर ली. So there was a flutter in my eyes, and then my Yeah. eyes closed completely. Okay, तो एक, Mouth था open. mouth was open, yes. So what is called Yeah. articulatory posturing, you saw that as well. ठीक है. तो मैं, Even your head went down, like you were like trying to get the word out, but वो हम्म, ऐसे होता है. Like in हम्म, general, हम्म, we all face this. yes. So you और saw head movements. So let's list these things, right? So you saw head movements, you saw blinking, rapid blinking of the eyes, you saw और me close my eyes. So it's important to label force, to break down force, because अब मैं रीडू में वही तीन चीजें जो है मैं डिफरेंट करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझको इनफ प्रैक्टिस है कि मैं जानता हूं कि मैंने बल्कि जब कहीं तो मैं अगली बार मैं फुल आई कांटेक्ट के साथ हकलाऊंगा. मैं जानता हूं कि मैंने हेड जर्किंग की, but I will keep my head straight and maintain full eye contact with the listener when I redo the stutter. Right? So there are these two major changes I will make on the redo. Okay. Theoretically एक प्रिंसिपल है कि हम सब ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, दिस इज नॉट 100%, बट दिस हैपेंस वेरी ऑफन, कि जब हम किसी शब्द के ऊपर हकलाते हैं और उस शब्द को फिर से रिपीट करते हैं, तो नॉर्मली उसमें कम संघर्ष होता है. Have you noticed this? This is not 100%, but this happens quite often. This is very yes, different from, this is actually very different from कि हम हकलाए और लिसनर ने हमें एनकरेज किया फिर बोलने के लिए. क्या बोला आपने? तब जो है टाइम प्रेशर और हमारा बढ़ जाता है, तो वो रिजल्ट जो है वो सेम नहीं होता. लेकिन हम सेल्फ इनिशिएटेड रीडू जब हम करते हैं, जब हम खुद रीडू इनिशिएट करते हैं, तो टिपिकली हमारा फ्लो थोड़ा बेहतर होता है, संघर्ष थोड़ा अगली बार बेहतर होता है. अगेन नॉट 100%, बट हैपेंस वेरी ऑफन. इसको स्पीच लिटरेचर में बोलते हैं, स्टैमरिंग लिटरेचर में बुलाते हैं मोटर रिहर्सल, कि when we rehearse something we find that it gets a little bit easier next time. अगर आप, there have been research investigations done over here in the US where we know that अगर आप कोई पैसेज रीड कर रहे हैं, कोई हकला रहा है, कोई रीडिंग पैसेज में जा रहा है, तो अगर आप रीडिंग पैसेज को तीन हिस्सों में बांटें, फर्स्ट वन थर्ड, सेकेंड वन थर्ड, थर्ड वन थर्ड, और कंपेयर कीजिए कि कितनी बार हकलाए हम फर्स्ट वन थर्ड में और सेकेंड वन थर्ड में और थर्ड वन थर्ड में, आपको लगेगा कि ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री है नीचे, इट गोज डाउन, द कर्व गोज डाउन. इसको अडेप्टेशन इफेक्ट बुलाते हैं, कि मतलब द बॉडी टेंड्स टू अडेप्ट टू द स्टटर ओवर टाइम. Project this longitudinally, chronologically, most people who stammer report that as they get older, they tend to stammer a little bit less. That is also part of motor rehearsal. That is also part of adaptation as well. Okay, so that's the theory behind it. So strategy, it's useful to have a strategy. I think it's very useful to have a strategy for a cancellation. And we'll talk a little bit about why we cancel. Let's talk a little bit about why we cancel. तो मैं जिस जिस शब्द के ऊपर हकलाया, अब मैंने कैंसलेशन की जिस पे, राइट, और अब मैं कैंसिल करने वाला हूं शब्द, 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 शब्द. बस मैंने 3 बार इसको रीडू किया. क्या पॉइंट है इसका? आपको क्या लगता है? लेट्स गेट इनटू द पॉइंट ऑफ इट. हकलाहट तो हो गई, उसके बाद उसको बदलाव उसमें लाने का क्या पॉइंट है? सर जब आपने शुरू में किया था तो एक कंटिन्यूअस एफर्ट था और अनकॉन्शियसली किया था, लेकिन सेकंड टाइम में आप
ज्यादा अवेयर थे और कॉग्निटिव भी ज्यादा अवेलेबल थे कि मैं कुछ अलग तरीके से कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो निर्मल ने बहुत सही बात कही कि मैं जो रिफ्लेक्सिव जो मूवमेंट है, जो मैं रिफ्लेक्स है मेरा पुश करने का, उसके ऊपर मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। आई एम टर्निंग अ रिफ्लेक्सिव मूवमेंट इनटू अ रिफ्लेक्टिव मूवमेंट। जैसे कि निर्मल ने बहुत अच्छा कहा कि मैं कॉग्निटिवली अवेलेबल रहा हूं अगली बार। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? तो दूसरा है ना, आपने जब सेकंड टाइम बोला तो ना मेंटली एक एक सिग्नल भी गया कि मैं सही से बोल सकता हूँ ये वर्ड। हम्म हम्म क्योंकि आपने जो वो टेंशन था, कभी कभार हम खुद से भी करते हैं, लाइक इफ आई स्टटर ऑन फोन या while स्पीकिंग टू समवन एल्स, घर आके वी डू रिविजिट जहाँ पे ज्यादा स्टैमर होता है। सो वी ट्राई टू गेट द वर्ड आउट इन अ सॉफ्ट मैनर, जैसे आपने किया। तो एक सिग्नल गया कि ओके, आगे आएगा तो करूंगा। सो दिस इज द थिंग आई बिलीव। वेरी गुड शौनक। इसका मतलब ये है दैट आई एम letting my body re-experience the same break with less struggle। कि क्या हो रहा है कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि stammering is associated with loss of control, right? That's the foundational thing। चाहे उसको repetition बुलाओ और prolongation बुलाओ और full block बुलाओ, जो भी उसको बुलाओ, it's fundamentally loss of control। I'm re-experiencing more control, which is related to what Nirmal said. The reason I can experience more control is because I'm cognitively more available. These points are connected. Very good. What else? And hello, sir. Hello. And one more thing, what I have observed is when we say that first word for the first time, we put lot of effort and lot of struggle. The second time, so after completion of the first word, our body pressure and the anxiety and the breathing will get blocked something. By repeating it for multiple times, for the next time, we are making ourselves relaxed. Yeah. Yeah. And Absolutely. The reason we are making ourselves relax, I'm going to reframe what Santosh just said a little bit. The reason we are doing this is because we are approaching behavior that we tend to avoid. I mean, कौन वापस जाना चाहता है? हम हथियार से दूर भागना चाहते हैं। हम इसलिए हम कई बार हमारे यहाँ मेंटालिटी होती है कि यहाँ से जल्दी से कुछ बोलना है बोलो, उसके बाद निकलो। उसके बाद अप्रोच कौन करना चाहता है? तो वी आर टीचिंग द बॉडी टू अप्रोच when the tendency is to avoid, right? So if we just fundamentally get behind the fact that we should be doing the opposite of all the things that we've been doing all our lives, we'll be on a better track। जहाँ पे avoid किया वहाँ पे approach करना है, जहाँ पे संघर्ष किया वहाँ पे कम संघर्ष करना है, right? All these things। Thank you। Very good points here। We are turning something that is typically avoidance behavior into approach behavior। So, many things. It's a simple thing, but there's a lot in there. Okay. A few more things, guys. Then we'll go on to some practice. I'll practice with Dipin a little bit. I'm also resisting time pressure. Time pressure is a killer, Yes, right? It's a real killer, big killer. a big killer. It's the one thing, like the biggest time pressure we find is on our name, right? I mean, वहां पे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आप अपना नाम देंगे, इमीडिएटली देंगे।
तो दैट इज टाइम प्रेशर, और वो शब्द ऐसा है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते झूठ बोलने के अनलेस वी आर विलिंग टू लाई. Yes, I've lied many times about my name. I'm sure some of us have also done that many times in our lives, right? So time pressure is a killer. So by going back, I am resisting time pressure. और चौथी बात और पांचवी बात, I don't remember what number it is now, is that I am very selectively going back on what I did during the moment and changing very specific behaviors. इसीलिए मैं आपको पूछ रहा था कि मैंने क्या किया जब मैं पहली बार हकलाया, फेक हकलाया, tightly. I know as I'm doing this, I will observe and say, I got faster, I got tense, then I mixed tension with hurry. I close my eyes. So these are the things I will do differently next time. जहां मैं आई कांटेक्ट नहीं बनाया वहां मैं आई कांटेक्ट बनाऊंगा. जब मेरी टेंशन थी और उसकी रफ्तार तेज हो गई, तो I will specifically correct that. So this is a way to reduce secondary behaviors. Welcome to Magic Music World. Bluetooth mode. So Connect. I will. Aditya would like to go on mute, please. So I will very selectively, because I've experienced secondary behavior, I will very selectively do this differently. So मैंने एक strategy बनाई है एक सोचने के लिए, cancellation strategy. इसका छोटा सा acronym है, short form है STOP. 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 Let's go over each one. S is for stop the movement. जिस भी शब्द के ऊपर मैं हकलाया, I'm going to stop right there. Okay. T. Take a pause. This is very important because pause में हम जो reflexive movement है उसको reflective movement का process start करेंगे. Pausing is very important. Pausing is very important for time pressure also. Right? So we are teaching the body to resist time pressure. Okay. Third, O. Observe the movement or observe the tension. That is why मैंने आपको पूछा था कि मैंने क्या किया, क्या देखा आपने. तो जो आपने देखा वो प्रतिक्रिया मेरी बॉडी में भी हो रही है approximately, लेकिन मैं खुद आर्टिकुलेट करके बताऊंगा कि मैंने क्या किया. Because whatever a listener, an observer picks up on a moment of stammering is only a fraction of what is actually going on internally in the body. So I will articulate, मैं verbalize करूंगा, vocalize करूंगा कि मैंने कहाँ पे मैंने क्या किया. मैंने अपनी पलकें झपकाई, मेरी रफ्तार ज्यादा हो गई, और उसके बाद जो है मैंने फिर मैंने आई कांटेक्ट अवॉइड करना शुरू कर दिया. So I will observe that. That is observing the tension. और तीसरा और चौथा जो है P is proceed differently. So when I redo the moment, this is the redo moment. when I redo that moment of stammering, what will I do differently? Maybe I'll do a bounce. Maybe I'll do a prolongation. Maybe I'll do a prolongation. Maybe I'll do a bounce. Maybe one time I'll do a bounce. Maybe I'll do one time a prolongation. Some change I will make. संघर्ष कम करने के लिए अगली बार. Make sense? Okay. Yes. So my suggestion to you is, if you've understood the technique and the reason behind it or the principle behind it, don't think that you'll be able to do this tomorrow in front of somebody. Don't put yourself under that pressure. This has to be done very gradually. तो TOPG में practice कर सकते हैं. Epan can lead you through this in breakouts. Yatharth can lead you through this breakouts if you're doing the TOPG right now. TISA member के साथ practice कीजिए. Supportive partner के साथ practice कीजिए. Right? और I recommend to you that do it in reading first. Because reading में क्या होता है कि हम pre-select words, pre-select
कर सकते हैं वर्ड्स जहाँ पे हमें हकलाहट ज्यादा होने वाली है। हम सब जानते हैं, हमारा शरीर जानता है कि किस शब्द के ऊपर हम ज्यादा हकलाने वाले के चांसेस हैं। और उसके ऊपर, और उस शब्द के ऊपर बाय चांस अगर नहीं हकलाए तो वॉलंटरीली टाइटली हकलाइए उसके ऊपर, and then go back and fix it. Do it differently. So reading is always recommended in speech therapy. Very often we start with reading. और अगर reading अगर challenging लगती है, then choose reading material that is one grade below. So reading is easy. The material is easy. और उसके बाद जो है spontaneous speech में किसी supportive partner के साथ try कीजिए, supportive context में try कीजिए. So Dipin, this is a very supportive context. So maybe you and I can do some work. Yes. Okay. Do you want to get some reading material out? Yep. I have a book. Shall I read the book, or do you want me to share my screen and show something there? No, just read it, but I want you to choose 2 words on which you're going to stammer. Okay. And let one of them be words on which you typically don't stammer. Because it's easier to do cancellations on words that you don't stammer, harder to do cancellations on words where you do stammer. So just choose 2. And if you're not feeling particularly amory today, then fake it. Sure. I have a book in front front There you go. That's front cancellation. That's a cancellation. He's front. done it twice. Let's go back on that word again. I want you to stammer really hard on that word and then wait for me. Wait for my cue. Front. Excellent. Stop. That's the first S. Stop the movement. Okay. Take a breath, take a pause, which you're already doing. Now talk to me. Talk to me. Where was the tension? What did you do? I was choking here. I was putting a lot of pressure, epiglottis, my lips, tongue, all this was trying to force the word out. So my jaws. Just stop for a second. On a scale of 1 to 7, 1 is light, 7 is very tight. At what level would you put that tension? Right now, the tension which I induce, it would be around 5 to 6. Around 5 to 6. So it was like way up there. Okay. And it was all over. Okay. What did you do with your face? What did you do with your eyes? What did you do with your head? What did you do with all the secondary behaviors? I closed my eyes. My head was down and my chest was heavy. I was not breathing. And I was also sweating also in order to put all the energy to push the word out. Good. So you're experiencing full body tension. Okay. Excellent. And then, yeah, so let's do the redo on that one now. This time I'll try to relax my jaws in this part. Try to breathe and maintain eye contact. So I'll use the same word again. Front. There we go. Front. There we go. Yeah, brilliant. That's a cancellation. Okay, keep reading and then throw in one, maybe 6 or 7 words out. Next. Stop. Take a breath, take a pause, talk to me. The most tension was on my tongue. I was trying to
say or move forward from the next. So ne, majorly my tongue, lips, those were the areas wherein I was feeling most tension. I also blinked and closed my eyes to push the word. I was not breathing. So the chest felt like completely blocked. तो वो सब कुछ हो रहा है मुझे. ठीक है. So शारीरिक क्रियाएं ये सब हो रही है. Breathing irregularity, vocal fold tension, articulatory tension, secondary behavior. I mean, what is secondary behavior? It's just signs of effort, Yeah. right? Blinking the eyes, moving the head, opening up a jar. It's tight. You can't open it. जोर लगाना. जोर लगाने से क्या होता है? आंख बंद होती है. That's what we're doing. It's a natural tendency in the body to restore continuity using force. So we're understanding the individualized nature of force in the moment. Brilliant. Keep going. तो अभी मैं ये वाला शब्द दोबारा अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन अब की बार मैं आई कांटेक्ट मेंटेन करने का ट्राई करूंगा और टंग जहां पर मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा था वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स होके आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट इट, और फोर्स की बजाय थोड़ा इजली वर्ड को बोलने की कोशिश करूंगा. तो ऑब्जेक्टिव फ्लुएंट होना नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रगल कम करना है. नन 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 नेक्स्ट Good. नेक्स्ट Good. नेक्स्ट. Good. Good. So Vipin did a redo with the pullout. He practiced a pullout. Next. That's a pullout. We haven't talked about pullouts yet, but that's what you did. Yeah. Yeah. You led with the bounce and then you did a pullout. So you practiced both bouncing and the pullout on the redo. So technique practice, right? That is part of turning something reflexive into something reflective. Okay. Questions, guys? Questions? Anything you want to go over? Anything unclear or any other curiosity you have? Yeah. Hello, sir. Yeah, hello. Who is this? I can't hear you. Santosh Khaire. Oh, yes. Please go whatever techniques just we have practiced and we have learned, it is easy to follow in a single room. But in real life, this seems very difficult to apply. Yeah. So in that situation, our mind, the way it works here in one room, it doesn't work the same outside in real world. Absolutely. Because Absolutely. we want to apply the technique. Yeah. We know the technique, Mm-hmm. how to apply, stop, observe, and proceed differently. That's right. But in real world, our mind doesn't allow to follow these steps. Yes. So in Yes. that case, how we have to work on that? Yeah, very good question. Very good question. Let's ask the group. What are some ways? What are some ideas in which we can apply these in an easier kind of a nirmal? That was a pull out on in nirmal. Go ahead. Due to self practice, मुझे whatever we have learned in this meeting, by doing a self practice, it may help in practically. Yeah, but the question that Santosh is asking is how? जो हमारी body जो है, it's the same body, but it functions differently in one situation versus another situation. Or we may try with this with our at home with our family members first, That's right. or our group of friends whom we know that they can understand our feelings. That's right. So start easy. You know, I've heard this expression recently that it's much easier to swim in shallow waters.
than to swim in a storm. So let's practice shallow waters. What are some shallow waters, right? We can all identify our comfort zones, people, places, topics that are stammer friendly. Hisa is very stammer friendly, very supportive. Probably the most supportive stammer friendly group of strangers you're ever going to meet. Let's start there. Can Yeah, I add one thing? yeah, please go ahead, Shonak. Sir, to answer Santosh sir's question, and also I have a second question. But first, I will answer his question. Go ahead. As you said, TISA is very, stammer friendly, or the comfort zone where we know the person, the audience will listen to us patiently and will allow us sufficient time to speak. So I believe बाहर तो वो एकदम से नहीं हो सकता, बट द पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड द वे वी आर letting our words out, stammer free or with less stammer, this also is a stepping stone, as Santosh sir is very frequent in attending meetings. Like back in his mind he must have उन्होंने ये चीज का जो इनपुट लिया होगा और बाहर जो कर रहे होंगे उसमें बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा होगा. लाइक जैसे वो एवरी डे मतलब मोर फ्रीक्वेंट जो ये मीटिंग्स अटेंड करते हैं. सो दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन. डायरेक्ट 10th फ्लोर पे नहीं पहुंच सकते, बट वी आर पर्सन हु हैड टू टेक स्टेयर्स. बाकी सब लिफ्ट से जा सकते हैं. So this is the thing. And Right. second thing is, the question which I want to ask is, जो opposite person होता है, as you said, कई कबार वो लोग पूछ लेते हैं क्या क्या, सॉरी, हमको टाइम प्रेशर आ जाता है, या while we are in a queue, we are ordering something, or while purchasing a ticket. This is a few example. But जब टाइम प्रेशर आता है, एट दैट टाइम मुझे पता है कि मुझे कुछ भी बोलना है तो मुझे पुल आउट, या मुझे प्रोलोंगेशन, या मुझे पोस्ट ब्लॉक करेक्शन, कैंसलेशन यू से. तो ये टाइम प्रेशर जब आता है ना, तो उस वक्त ये सारी चीजें, मतलब आई नो टीसा मीटिंग से अटेंड कर रहे हैं, बट उस वक्त बहुत ज्यादा हैम्पर करता है और वी गेट स्टक वेरी बैडली. Yeah. बाकी लोगों ने भी किया होगा ऑब्जर्व. सो आई वांट टू नो उस एग्जैक्ट मोमेंट के लिए प्री प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं. तो इसका इसका कोई सरल सरल, that was a real stammer on सरल. I went and I did it differently. I could have paused more. I could have reflected more. But I also felt the time pressure to respond to your question, Shaunak, so I moved forward. So we all feel time pressure. I just wanted to illustrate that. So yes, that is a very high level. अगर आप अपने zones बनाएंगे तो आपको लगेगा कि एक तो मेरा comfort zone है, यहाँ पे मैं हर दिन practice कर सकता हूँ. Supportive communicative environment में, let me start there, as you said, first step, second step, third step, right? Getting into the habit of resisting time pressure. We're in the habit of succumbing to time pressure. Let's develop some habits of developing some resistance to time pressure in those areas. Then above the comfort zone is our stretch zone. यहाँ पे थोड़ा और challenging है, लेकिन काम is within capacity. थोड़ा अगर मैं पुश करूं अपने आप को तो मैं कर सकता हूं. और जो हाईएस्ट लेवल है वो मेरा स्ट्रेस जोन है. सेफ जोन है मेरा स्ट्रेच जोन है, और मेरा स्ट्रेस जोन है. और उस स्ट्रेस जोन में लगता है हम सबके साथ ऐसे ही होता है कि टिकट काउंटर के ऊपर किसी टिकट ऑर्डर करनी है, रिटेल में बात करनी है, टाइम लाइन में है, लोग 20 लोग हैं पीछे. तो
आई ऑल्सो फील द टाइम प्रेशर, लेकिन मैंने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है कि मैं टाइम प्रेशर के यहाँ पे मुझको टाइम प्रेशर ज्यादा महसूस होता है. हाउ डू आई रेजिस्ट टाइम प्रेशर? तो मे बी आई लीड विद डिस्क्लोजर. If I'm ordering a ticket at a retail, I used to do this very often when I used to go in COVID. I used to wear a mask, say, I'm a person who stammers, please be patient. अब मैंने डिस्क्लोज कर दिया. अब मैं छुपाने की जरूरत नहीं है मुझे. थियोरेटिकली छुपाने की जरूरत नहीं है मुझे. I might also disclose and say I stammer, so sometimes when I stammer, I'll say the word again. There are many ways of getting into these habits of resisting time pressure, so that over time, step by step by step by step by step, by doing this regularly, we build enough momentum that we can take it to the highest level. And maybe the highest level will not come for the next 6 months. Maybe the highest level will come in a year's time. Okay, that's fine. It's a journey. We can keep getting better at it, better at it, better at it. And maybe we never feel comfortable in a high zone, but we've come so far. In the process of reaching that level, we have come so far. हमने डेली प्रैक्टिस की, मोमेंटम डेवलप किया, कंफर्ट लिया, डिस्क्लोजर किया, अवॉइडेंस कम की, वॉलंटरी स्टैमरिंग कम की. Automatically your body will be in a position where you will feel more relaxed, and then you're more likely to apply the technique. Dipin, go ahead. अमित, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस ग्रुप के साथ में शेयर शेयर Good cancellation. Good शेयर cancellation. करना चाहता हूँ. Yep, go ahead. जैसा कि अभी शौनक ने बताया कि जहाँ पर टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है या फिर जिन सिचुएशंस में हमको दिक्कत ज़्यादा होती है, वहाँ टेक्निक्स अप्लाई करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है और शायद नहीं कर पाते. मेरे लिए ऑफिस में अपने मैनेजर्स के साथ में बात करना एक बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था. तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, ये टेक्निक सीखने के बाद भी वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहा था. तो मैंने पहला पहला गोल अपने लिए रखा कि मैं आई कांटेक्ट करके उनके सामने खाली हकलाऊंगा. जब मैं उस हकलाने के प्रोसेस मैंने उनके साथ में शुरू किया, उनकी आंखों में आंखें डालकर, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ी और हिम्मत आई. फिर अगली बार मैंने एक और छोटा स्टेप लिया कि अब की बार मैं शायद हकलाने के साथ में एक छोटा पुल आउट या कुछ भी नेक्स्ट स्टेप ट्राई करूंगा. सो द आइडिया इज कि जो आपके डिफिकल्ट, पहले तो आपने जैसे अमित ने बताया आपके कंफर्ट जोन्स में प्रैक्टिस की, फिर आपके डिफिकल्ट जोन्स में भी आपने स्टेप बाय स्टेप उनके साथ एक्सपेरिमेंट का लेवल बढ़ाया आपने. पहले खाली शायद बहुत बड़ी हिम्मत आएगी आपको अगर आप करना चाहो. टिकट काउंटर पे उनकी आंखों में आंखें डाल के आप बोलो कि मुझे टिकट चाहिए. तो फ्लुएंसी का गोल बाद में रखेंगे, पहले खाली हकलाने का गोल रखते हैं कि उनके सामने आज जाकर मैं आंखों में आंख डाल के हकला लूंगा. आप देखना नेक्स्ट टाइम आपको और हिम्मत आएगी और आप शायद नेक्स्ट टाइम ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाओगे. अच्छा. Brilliant. Brilliant. Thank you so much for that explanation. Thank you. Dipin. It's best that it comes from Best you. answer. Yeah, beautiful. Thank you. What else? और कोई प्रश्न? Yes, संतोष जी. संतोष जी को नहीं पूछ रहे हैं, वो केवल एक थम्स अप दे रहे हैं. अच्छा, thumbs up दे रहे हैं. No, Sorry. sir. ग्रुप में क्या किसी को ऐसा लगता है कि इस I think Dipin freeze हो गए. लेकिन Sir, I have one question if I may ask. yes, you can ask. बारे में तो पूछ सकते हैं. Who was asking the question? Because Kishan had his hand Sir, I raised. was asking the question. Zoravar. Okay. Sir, sometimes we get a block in back to backwards, right? So in that situation, how to, handle that situation and complete the whole sentence. So what do you mean by that? Yeah, tell me some more. Let me somehow, like I just, share the experience I had in the morning. I was in the
hospital. Okay. So I had some issue there regarding my insurance. So that that has to be a very small, uh, conversation. But due to my stammering, it took a long time. So I had a back-to-back blocks on, every word. And after some time, I was, completely feeling exhausted. I could feel the pain in my jaw. Yeah. So what to do in that, you know? I know that I also stopped at some point. Okay, I tried to use the airflow technique like this, the way I'm, speaking right now. I'm, you know, getting a block, but I'm in this meeting, so I know that I'm at my comfort zone. Mm-hmm. So at that point, I was just trying to force the words out. When I was taking a pause, so even that, तो वो भी उस टाइम पे काम नहीं आया. I could feel the heaviness in my chest. Mm-hmm. तो उस Yeah. टाइम पे ऐसा था कि सांस भी नहीं है मुझे आ रही. हाँ, नहीं वो होता है. तो बैक टू बैक जब जब एक्चुअली जब जब वी आर मेनी टाइम्स anybody can relate to this that we are having sometimes a very difficult day with blocking on every word, blocking on every second word, blocking on every third word, वो होता है. तो maybe और उस सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई हैव अ कपल ऑफ सजेशंस. Maybe because you know there are certain situations that are going to be difficult for you, you know that ahead of time, right? So I'm assuming now that you have done this for a while. You have some practice with the technique. You've been able to transition from your comfort zone to your stretch zones, and now you're at this highest level where you're still feeling very difficult. That is very difficult to do. But you know you're going to have trouble in that situation, right? You know you're going to stammer in that situation. And lo and behold, you do stammer in that situation one time, second time, back-to-back blocks. Maybe decide to do a cancellation once on one of those blocks. That way you're giving your body the experience that I can practice some ease, at least on one of those words. Because if you think that because of this session that we are having, that you'll be able to use this technique out there in the real world, that is not a realistic expectation. That's why I'm saying that maybe you've practiced, maybe you've gone through the process, you've built enough momentum, you have been able to do the kinds of things that Vipin is talking about, that you are in a generally a bit more relaxed state with your stammer, more accepting of your stammer, more disclosing of your stammer. And now you're still stuck in that situation where you're having back-to-back blocks, you will automatically have more facility to do this. And maybe you won't have a facility to do this in every word because it's difficult to do it. Cancellations are very difficult to do in real life. But if you might be able to do it on one of those words, or maybe two of those words. And maybe another situation is you role play the same conversation that you had in the hospital. Insurance की जो conversation आपकी हुई आज, you role play that with another TSAM member. And in that role play, you practice some of these behaviors. Point is, शारीरिक रूप में हम अपनी body को different experience दे रहे हैं. संतोष. हेलो सर. हेलो. अभी जो आपने कहा था उसके ऊपर एक सवाल था, उसके बाद एक था. अभी जो आपने कहा है कि जो हॉस्पिटल इंश्योरेंस में जहाँ पे मुझे स्टैमरिंग हुआ है, लेकिन वो जो पर्सन था वो अलग है, कि उस पर्सन को देखने आपका माइंड के थॉट्स चेंज होते हैं. अगर वही हम टीसा मेंबर के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं. Sure. तो वो आदमी को, जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसके सामने हम बात कर रहे हैं, तो डिपेंड ऑन दैट सिचुएशन एंड दैट पर्सन. तो Yes. हमारा थॉट प्रोसेस अलग होता है. Sure. तो हम यहाँ पे कंफर्टेबल है, वहां पे कंफर्टेबल नहीं है. एकदम आपने
आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बॉडी बिहेव्स डिफरेंटली इन अ कंफर्ट सिचुएशन देन इट बिहेव्स देन इन अनदर सिचुएशन. ठीक है, तो मे बी Zorawar can go into that situation again and have the same conversation again with somebody else. Yeah. Re-experience that same situation in a more comfortable way. It's Yes, going sir. to be challenging, but you're absolutely right. And you can do both. You can role play Yeah. with a TISA member, experience what that is like, experience the same conversation, role play that same conversation in your stretch zone. Maybe a friend that you're not that comfortable with, but you have the capacity to do this with that person. And maybe redo the conversation again on a third day or a fourth day. That way, your body is experiencing this a little bit more ease while the challenge level is still high. Yes, exactly, sir. Yeah. Thank you very much. And I Sure. have one more question that you have explained about the mid block and the post block. When you entered the block, how to come out of that block with ease. Just I want to know about the pre-block. Before entering the block, what all things we have to take precautions or how to Yeah. work. So pre-block तो हम जानते हैं, bouncing, light voluntary stammering. Bouncing is a variety of voluntary stammering. Prolongation is a variety of voluntary stammering. Voluntary stammering can be tight. Voluntary stammering can be light. Voluntary stammering can mimic your pattern. Voluntary stammering can be different from your pattern. Voluntary stammering can be infrequent. Voluntary stammering can be frequent. Voluntary stammering is a very useful technique, very difficult to do, but it's a very useful technique. Anything I've learned differently, how to manage my stammer differently, I've learned through voluntary stammering, disclosure, avoidance, reduction. Three main things. So Okay. if I can voluntary stammer, let's take Zoravar's example, right? He's going to have a conversation with an insurance in the hospital talking about insurance. So maybe he can do some voluntary stammering with that person a little bit before. Automatically relax ho gaya wo. Yeah. And then maybe the blocks will be there, but maybe not as tight. Yeah. We'll be at ease. Yeah. You're already desensitized by voluntary stammering. By voluntary stammering, we've also disclosed our stammer. By voluntary stammering, I've also practiced voluntarily the stammering with full eye contact as I'm doing right now. I'm doing very light voluntary stammering on every second, third word. It's very frequent, but it's still very light, and it's with full eye contact. Absolutely. Thank you, sir. Sure. Thank you very much. Perfect. I think we are at the top of the hour. 3 minutes left. So today Sir, may I have asked something? yeah, Udesh. So we'll be taking this last questions, and then we have a hard stop at 8. Hi, Good evening, Uday. Amit sir. Hello, sir. Hello. How are you, sir? Nice to see you again. Thanks, sir. Same here, sir. Same here. Hello, Deepak, sir. How are I'm you? good. I'm good. I'm good. Actually, sir, मेरा क्वेश्चन ये है, जी. ऑल्दो हमारे यहाँ टीसा का मेन मोटिव है एक्सेप्टेंस, हाँ. उसके बाद ही हम लोग जो प्रैक्टिस वगैरह है कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, Right. पर यहाँ पे ना एक्सेप्टेंस के लेवल है, Hmm. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. तो मेरे बिल्कुल. साथ अभी लास्ट मंथ क्या हुआ, Hmm. we had a quarterly review meeting with our HOD, और वहाँ पर पूरा स्टाफ था, अराउंड 40-50 के अराउंड मेरे कलीग्स थे. Hmm. तो वहाँ पर ऑल्दो जो मेरे सीनियर्स थे उनको ही बोलना था, बट फिर भी माय HOD आस्क्ड कि जो भी जूनियर्स हैं वो भी अपना इंट्रोडक्शन दें, और क्या उन्होंने अभी तक काम किया है इस क्वार्टर में, आपको वो रिव्यू बताना है. बट लेकिन जब मुझे पता है मेरा टर्न आने वाला है, तो आई वाज लिटरली शिवरिंग. तो समहाउ मैं वैसे जब से मैंने टीसा ज्वाइन किया है मैं एक्सेप्टेंस कर पाया हूँ, लेकिन ऐसे माहौल में अभी भी मेरे को वो एक्सेप्टेंस नहीं आया है.
उसके पीछे शायद एक रीज़न ये भी है क्योंकि मेरा काम फील्ड का है। मैं जनरली ऑडिट पे होता हूँ, तो हमें जनरली ऑफिस में जाना इतना नहीं होता। बट उस दिन जब मैं आया, पूरा ऑफिस वहाँ पर था, तो एक था माइंड में टेंशन थी, ये जब मुझे बोलना होगा तो अगर मैं अगला गया तो व्हाट आई एम गोना फील। तो सर मुझे पता है इसका आंसर तो है एक्सेप्टेंस, बट फिर भी मुझे आपसे जानना है कि इसमें हमें कैसे, मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस के लिए। सो देश, ये एक्सेप्टेंस का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम लोग मेंटली जो है किसी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इमोशनली भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं हकलाता हूँ, मैं सारी जिंदगी हकलाऊंगा, ऐसे कोई बात नहीं। हकलाना एक एक नॉर्मल नेचुरल न्यूरो डाइवर्सिटी है। ये सब कुछ जो है ये थियोरेटिकल है। तो practicing acceptance on a regular basis, that's where the answer is, right? तो I will ask you the follow up कि अगर आपने, जब आपको थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है कि मैं सारी मीटिंग में अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, हाउ यूज टू डिस्क्लोजर आर यू? अगर आप रेगुलरली डिस्क्लोज करते हैं, फैमिली को डिस्क्लोज किया, फ्रेंड्स को डिस्क्लोज किया, शॉपकीपर को डिस्क्लोज किया, रेडी वाले को डिस्क्लोज किया, नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस। अगर आपने वॉलंटरी स्टैमरिंग की, 1 दिन की, 2 दिन की, इस सिचुएशन की, दूसरी, नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस। अगर आप अवॉइडेंस रिडक्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं किस सिचुएशन को अवॉइड करता हूँ, किस शब्द को अवॉइड करता हूँ, लेट मी गो डायरेक्टली इनटू द वर्ड स्टैमर ऑन दैट वर्ड, लेट मी नॉट अवॉइड दैट वर्ड। और या अगर मैंने कोई वर्ड चेंज किया, अवॉइड किया, लेट मी यूज दैट वर्ड अगेन इन द सेम कॉन्वर्सेशन। दैट इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग वर्ड अवॉइडेंसेस। तो एक्सेप्टेंस थियोरेटिकल भी हो सकती है और प्रैक्टिकल भी हो सकती है। सो थियोरेटिकल को प्रैक्टिकल बनाना बड़ा जरूरी है। That is why when I talk about acceptance, I talk about acceptance as a practice. And these are the 3 ways in which we can practice acceptance on a regular basis. अगर आप इन 3 चीजों को रेगुलरली किसी मात्रा में, किसी हद तक करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप डिसेंसिटाइज होंगे, उस सिचुएशन में भी थोड़े और डिसेंसिटाइज होंगे। तो जब आप इंट्रोड्यूस करने वाले होंगे, लाइक दैट्स व्हाट आई डू when I'm introducing myself to a group of strangers at work, for example, my colleagues, जो मेरे कॉलेज में, मैं फैकल्टी में, I always lead with the disclosure and with the voluntary stammer. That before I introduce myself, I just want you to know that I'm a person who stammers. It may take me a little bit longer to get my words out. Please be patient with me. Give me a little bit more eye contact and give me a little bit more time. And Okay, by the way, my name is Amit. thank you, sir. Thank you, Amit. Thank you, everyone. Unfortunately, we are at the top of the hour, and we had a hard stop at 8. But I will also post the recording of this session on the TISA Telegram channel, and I have left my Telegram ID in the chat. For any follow-up questions, you can reach out to me, and maybe I can direct those questions to Dr. Amit also. Thank you. Thank you for being interactive. Thank you for taking part. And thank you, Amit, for your time. Most welcome. Bye, everybody. Nice seeing everyone. Bye. 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 Thank Thank you, you, sir. everyone. Bye. Thank you. everyone. Thank you. Thank you for